हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट रूट वर्ड डिस्कस करेंगे जिन्हें आइडेंटिफाई करके आप किसी भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी का कंप्लीट मीनिंग फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इससे पहले वाले सेशन में भी हमने काफ़ी सारे रूट वर्ड, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस डिस्कस किए थे। तो ये सेशन उसी के कंटिन्यूएशन में जहाँ पे हम और इसके बारे में पढ़ेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑन गोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी हमारा मेन फोकस किस पे होगा कि कैसे हम यूज़ करते हैं एंगुलर में कैसे हम यूज़ करते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर कैसे रूट वर्ड को आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, बट स्टार्ट करते हैं अभी। तो जो पहली चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे वो है रूट वर्ड का मीनिंग, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पहली बार डायरेक्टली इस सेशन को देख रहे हो सीरीज़ के, तो उनके लिए जस्ट एक छोटा सा रिकैप कि रूट वर्ड एक ऐसा वर्ड होता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी का जिससे आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी भी कंप्लीट टर्मिनोलॉजी का मीनिंग। ठीक है, किसी भी टर्मिनोलॉजी का कंप्लीट मीनिंग। अब बात होती है रूट वर्ड की, तो ये ज़्यादातर डिनोट करता है किसको, बॉडी पार्ट को या ऑर्गन सिस्टम को। और ये प्रेजेंट हो सकता है बिगिनिंग में भी, मिडिल में भी और एंड में भी। तो आप लोग इसी से आइडेंटिफाई करोगे कि अगर कोई बॉडी पार्ट से रिलेटेड हमारा इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है रूट वर्ड से, और उसके साथ में हमारे मतलब उस रूट वर्ड से आपको पूरी मेडिकल टर्मिनोलॉजी की 90% से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो उसे हम किससे डिनोट करेंगे, उसे हम डिनोट करेंगे रूट वर्ड से। ओके, देखते हैं पहला रूट वर्ड। आज का जो पहला रूट वर्ड है हमारे पास वो है एडन और एडेनो। एडन और एडेनो जो डिनोट करता है ग्लैंड को। ठीक है, एडन और एडेनो जो डिनोट करेगा ग्लैंड को, जैसे एडिनोमा। एडिनोमा मीन्स ग्लैंड ट्यूमर। नोमा means we know that noma is something related to tumor. Adenoma means gland tumor. Adenoma means gland tumor. Then we have adenitis. Adenitis means gland inflammation. So itis, I think this is one of the most useful or most frequently used root word we have discussed, right? Because itis is utilized, and I'm sure like by this session, by this series, like you have learned so many suffixes and prefixes, and that is why we are doing it in every session repetitively, because my intention is to provide you the knowledge that will help you to clear your interviews as well as your exams. Okay, so adenitis means gland inflammation and adenoma means gland tumor. So noma, N-O-M-A, if it is there, so it is related to tumor. Okay, likewise we have another thing that is blephar or blephro. Blephar or blephro, which is denoting the eyelid. Okay, so if the terminology is related to eyelid, then you will find the root word as blephar or blepharo. For example, blepharitis. Blepharitis क्या होता है? Blepharitis होगा हमारा eyelid inflammation. ठीक है, तो eyelid से eyelid में अगर कोई inflammation होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, blepharitis. ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया। एडेनोमा वाला पार्ट क्लियर है कि एडेनोमा जो है वो ग्लैंड ट्यूमर को रिप्रेजेंट करता है। एडेनाइटिस जो है वो ग्लैंड इन्फ्लेमेशन को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम बात करें ब्लेफर और ब्लेफरो की, तो आईलिड को डिनोट करता है। एग्जाम्पल देखा हमने ब्लेफराइटिस, मतलब आईलिड का इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो किसी भी रीजन से अगर आईलिड में इन्फ्लेमेशन होता है तो उसे हम डिनोट करते हैं किससे, ब्लेफराइटिस से। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लेफरोप्लास्टी। ब्लेफरोप्लास्टी जिसको हम बोलेंगे आईलिड सर्जरी। तो अगर किसी भी रीज़न से, किसी भी मेडिकल कंडीशंस की वजह से अगर आईलिड सर्जरी परफॉर्म होती है तो उसे हम टर्मिनोलॉजी से डिफाइन करते हैं ब्लेफरोप्लास्टी, जहाँ पे ब्लेफरो जो है वो डिनोट कर रहा है किसको, वो डिनोट कर रहा है हमारे आईलिड को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ब्रैकी और ब्रैकियो जो डिनोट करता है आर्म को। ठीक है, ब्रैकी और ब्रैकियो जो डिनोट करेगा आर्म को, जैसे ब्रैकाइल आर्टरी। ब्रैकाइल आर्टरी मीन्स मेन आर्म आर्टरी। ब्रैकाइल आर्टरी मीन्स मेन आर्म आर्टरी. Similarly, we have brachial plexus. Plexus nerve bundle in the arm. Okay, so if a doctor diagnose some nerve bundles, although it is there, but yeah, nerve bundle in arm is denoted with the terminology brachial plexus. Brachial plexus. Okay,
So we discussed about aden, adeno, blephar, blephro, brachi, branchio. So these are the some root word. Now we will see a few more root word, that is onych or onycho. So if a terminology is related to nail, okay, so in that case we will use the terminology root word as onych or onycho. For example, onychomycosis. Onychomycosis means nail fungus. So if a fungus is found in the nail, then in that case we will use the terminology onychomycosis. Next we have onycholysis. Onycholysis means separation of a nail from its bed. So sometime what happens, a nail is removed from the finger from its bed. Okay, so if nail is removed from the bed, then bed means the area where nail is stuck on finger, right? So from there, if a nail is removed, separated, then we will call it as a onycholysis. Okay, next we have burs or bursa, which is nothing but related to joint sac, bursa. Okay, so burs or bursa is related to joint sac, bursa, and examples are bursitis. Bursitis means sac inflammation near the joint. So for any injury or due to any injury, if the sac area, okay, joint sac area is inflamed near the joints, then we will define that term as sac inflammation near the joint. We will define it as a bursitis. Next we have bursectomy. Bursectomy means removal of bursa. Maybe for any particular condition, if the bursa is removed from the patient body, then we will call it as a bursectomy. Bursectomy means removal of bursa. Here ectomy is used for the removal procedure. So through medical surgery, if something is removed from the body part, then we will use the terminology suffix as ectomy, and the root word here we have as burs. So bursa, ectomy means removal of bursa. Next we have medulla or medulla, which is nothing but related to middle marrow. Okay, so if the terminology is related to middle marrow, then we will you will find the root word as medull or medulla. For example, medulla oblongata. Medulla oblongata means inner brain region. Okay, so this is the area showing the inner brain region. And then we have medullary. Medullary means relating to marrow or inner part. Okay, related to marrow or inner part. So I think these all root word is clear to all of you, and as I mentioned earlier also, don't get confused between the prefix and root word, because mostly people get confused there. So if you are looking at a terminology, for example adenitis, so in adenitis we know that it is in the beginning, that is fine, and we know that usually root word comes in the beginning, but it is not always fixed. Okay, sometime you will find the root word also. So aden, we know that it is related to gland and it is present in the beginning, but that doesn't mean it is a prefix. Okay, similarly if you see another example, here you can see we have bursectomy. Okay, so here also, like we are using suffix ectomy, it is in the beginning, but still it is what, it is the root word, not the prefix. Okay, so the easiest way to identify the difference between suffix prefix and root word is, with root word is a word which will provide you information related to some body part or organ system. Okay, and it is also providing you the information almost more than 90%. So if you think that this is a kind of word, then you can easily simply consider it as a root word. Otherwise you will consider it as a prefix. And if you don't know anything about prefix, you can refer the prefix sessions, like there is a book in the description, you can refer, and it will give you the idea like how the prefix suffix are working along with the root word. Okay, so yeah, I think now these all root word is clear. We discussed about adeno, blephro, brachi, onco, bursa, medulla. And for today there is one question for all of you, and the question is, what is the meaning of tonsil or root word?
I'm sure most of you already know the answer of this question, so please do share your knowledge in the comment section. In case if you don't know the answer, don't worry, there is a detailed session on this topics which you can refer in the previous one, so it will give you the idea like how we are utilizing it. So yeah, that's all for today. See you in the next session with new topics. So thank you for watching Tech Sharmit.